Welcome to my YouTube channel Maktabe-Hind. Let's learn with fun. Hello children, today we are going to learn subject Environmental Science. Standard first, teacher name Nazia Zakir Sheikh. School Anjuman Islam's BM and DM PM Urdu Primary School Semi English Pune 1. Children, observe this video. In this video, you can see clouds, mountain covered with snow, hill covered with trees, grassland, helicopter flying in air, people, etc. Now in this video, you can see flying birds, boat, sheep, sea, mountains, rocks, flying birds, grass, flowers, etc. All these things we find around us makes our environment. So, today we are going to learn lesson our environment and me. माहौल और मैं. What is environment? माहौल किसे कहते हैं? Answer: environment consists of surroundings means air, water and land. माहौल अतराफ की चीजें जैसे हवा, पानी और जमीन से मिलकर बना है. Look at this picture. We need air to breathe. हमें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है. Water. Water is very important in our life. All the living creatures use water for drinking, planting trees, washing, etc. Land. Land consists of many things: grass, trees, home. हमारे अतराफ में मौजूद तमाम चीजें जमीन कहलाती है, जिसे इंग्लिश में हम लैंड कहते हैं. We live on land. It consists of everything we see around. We live on land. Now, in this picture, we see many animals. These animals live on land, so they are called land animals. जमीन पर रहने वाले जानवर. ये जानवर जमीन पर रहते हैं. Wild animals. In this picture, you can see wild animals. Wild animals यानी जंगली जानवर. ये भी जमीन पर ही रहते हैं. Domestic animal यानी खेती के काम आने वाले, बार बिरदारी के काम आने वाले और ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले एनिमल्स. ये एनिमल्स भी जमीन पर ही रहते हैं और हमारे माहौल का एक हिस्सा है. These are part of our environment. Birds. Flying birds are also a part of
our environment. Plants, दरख्त, फूल, परिंदे, जानवर, इंसान, माँ बाप, पड़ोसी, दोस्त, ये तमाम चीजें हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं. प्लांट्स, फ्लावर, एनिमल and people like mother, father, neighbors, friends makes environment. Green grass and blue sky also makes our environment. सरसब्ज घास और नीला आसमान ये भी हमारे माहौल का एक हिस्सा है. Trees with fruits and birds also make environment. फलदार दरख्त, परिंदे हमारा माहौल का एक हिस्सा है. Butterfly on flower is also a part of our environment. तितलियां भी माहौल का हिस्सा है. Fishes in the pond are also part of environment. समंदर, तालाब की मछलियां भी हमारे माहौल का हिस्सा है. I am a part of my environment. मैं भी माहौल का एक अहम हिस्सा हूँ. मुझे भी माहौल का ख्याल रखना चाहिए. I must take good care of it. I must always keep my environment green and clean. We have to keep our environment clean. How we will do it? हमें हमारे माहौल को साफ रखना है. हम किस तरह हमारे माहौल को साफ रखेंगे? चलिए देखते हैं. Never throw wrappers and any garbage on the ground. कचरा मैदान में नहीं डालेंगे. Always throw waste and garbage in the dustbin. हमेशा कचरा और दीगर बेकार कूड़ा कूड़ेदान में ही डालेंगे. Water the plants every day. They gives us food. दरख्तों को पानी देंगे क्योंकि वो हमें ग़िज़ा फराहम करते हैं. Don't spit on the road or in the park. रास्ते पर, बाग में नहीं थूकेंगे. Now we know that our environment is very important and we all are a part of this environment. तो बच्चों हमें पता चला कि माहौल हमारे लिए कितना अहम है और हम सब उसका एक अहम हिस्सा है. Now it's time for homework. Stick the pictures of any 5 things from our environment. आपको हमारे environment, हमारे माहौल में जो भी चीजें नजर आती है उनकी तस्वीर अपनी नोटबुक में चस्पा करनी है. I hope you enjoyed the video. So like the video, share the video and subscribe to my YouTube channel Maktab-e-Hind. Thank you. Have a blessed day.